Yes, sir, Yes, you are. sir. Okay. So I think actually Dean of Sharda University has already told us, because Akshay Kumar and Sara Ali Khan is there and they are on shooting, and sir was again saying that as soon as possible he will join us, and Akshita ma'am is also in shooting, so we can also start, because this is a very common topic that okay, why extracurricular activities are important. So Isha ma'am, I just wanna start with you, that why and which are the activities, because I hope there are many activities we do. Sports also comes under this, and we also do singing, dancing, and paintings and all through Kalaakaarmanch and Sanskritik Setu. So I just want from you all guys, because it is very we don't have that much time nowadays, but it is very important, because this through this we just release our stress and we follow our passion. So can you guys can come in front and say about this? I wanna see that face of yours. So personally, I think that extracurricular is more than just stress buster. Like since from my childhood, we've been hearing that extracurriculum is as important as academics. So, but we still this stigmatized notion of it not being the popular career option is still there. It exists till now. So eradication of that will take time. It is happening. I'm not saying that it's not happening. It will take time though. And I think extracurriculum is more than just being in sports or being a dancer or being a singer, an actor, theater. It's more like people are becoming bloggers these days. People are becoming makeup artists. There are uh, graffiti artists, tattoo artists, hairdressers, shoe designers. All these things, they don't come into the major limelight. So I think for me, extracurricular include is a whole of everything which does not it is not included in academics. So I think we need to throw more light and we need to become a mutually more inclusive towards things that we don't think can be a possible career option. Someone else wanna come up with their answer? So, sorry, sir. Someone else also wanna come up with their answers, Yeah. please. Vandita ma'am. Okay, Isha, what do you think? Like, just because of social media, also, a great platform we are getting for extracurricular activities. Otherwise, always there is a like, we are frightened. Like, okay, only through academics we can perform well Hmm. and be, and get settled. So, what do you think? Like, what is the major? Is there any major role just because of Instagram, Facebook, and other social media in extracurricular activities, and we are getting these things done? So social media obviously plays a major role in career development if you are going for something that is not traditionally accepted in the society. And I think we are so, as you said, that we are very scared to go for something which is off the track. So that is because a lot of parental pressure is also there. The generation before us, the generation that is giving us education and all of that, that generation has not been given that kind of exposure that we are getting. So that is the problem. It is the generational gap. So parents as well as students, we all need to become more mutually inclusive towards ideas like this. So that is one thing. And it's very difficult. Like we have had previous webinars also. So it has always been difficult. It has been a life, people have to go through some decisions before they choose something they want to go for. Personally, that's their dream. To pursue their dream, or I would say rather, people have to take few and few decisions. So parents, so ये डर हो जाता है हम लोगों को भी basically कि how are our parents going to react, how are they going to accept it. So I think that is one problem. We're not very vocal. Sometimes it gets very stigmatized. That's why. Nowadays I also see, like, in the era of 2020, now the face of extracurricular activities has already changed, because now youth want to do internship as Hmm.
there in like extracurricular. We are doing like social work, and we are being volunteers, being like extracurricular activities. Some I have seen more so many NSS students and NCC cadets. They are like helping to unprivileged students by devoting their time for their studies and academics. So this is also what you say about this kind of extracurricular activities and how they all are impacting us. Social work, I think I have always believed that social work should be mandatory since schooling only. Like every child should be programmed into social work. Because if you are not empathic towards underprivileged, you cannot understand the problem. Like corporate culture is all about understanding what is the problem of your juniors and delegation and everything. As a commerce student, I can say that. And that is why I think empathy is lacking majorly in our corporate culture, in our education system. So that's why I think social work should be necessary, mandatory in schooling for young kids from 5th 6th standard to to 12th standard, to make them empathic towards the underprivileged, because India is a country which is still developing. 44.8% of the population lives below poverty line. So that is one thing that we need to understand. We need to be receptible towards them, because I am privileged. I still hold a stage, so I can use it for others' benefits as well. On the same topic, I was like thinking and I was googling it. What Vandita ma'am was saying, like, okay, sir, now extracurricular activities have no limits. Like prior we were like thinking like, okay, dancing, singing, and other stuff of art are in extracurricular activities. But being a social worker, being a volunteer, this is also including nowadays in extracurricular activities, and you can Yes, calculate sir. you can take example of Sharda University. There is a Sharda Foundation, and there are hundred of youths who are devoting their time in they are educating the privileged and poor students and children. They are devoting approx 1 to 2 hours daily in the campus itself. So I was calculating like there are more than, according to 2015 survey of India, there are approx 760 universities in India itself, and approx 38,498 colleges. So how many youths are there? Millions of youths are there, and if we at least 1% of the youth can like start doing this kind of things as extracurricular activities, so I don't think like we are far away to get the 99% literacy rate in India. What do you think? Yeah, sir, totally. I agree with it, like completely, because the part of population that is indulging it in right now, and if the same rate say it increases, so I think it won't be a big challenge. And because there are states which are really underprivileged. I am from Bihar, and Bihar is a very underprivileged, illiterate state. It comes into that. So that is how we program into it. Like different foundations, even a simple gesture like book donations. You can donate your old books to these NGOs, which can provide a resource, a source of education toward to the people who are not programmed, who can't afford it. Because education right now in India still is a luxury. It has not become a necessity. Yeah, definitely, ma'am. And I also wanna have some answers, and I wanna want all the other team members to share their experiences and about are they really interested in extracurricular activities, and if yes, then how it impact on their life. So please, if someone wanna come and ask or say May something, I? yeah, I would like to add on Isha ma'am's point that it is obvious that curriculum activities are very much important nowadays. People are more into activities than in education. I feel like current generation is more towards academics. We all know that I live in Mumbai, so basically here I have found that the students of the colleges as well as the school, they are more talented towards activities and presenting themselves. And as you mentioned previously that
not just dance and singing is something which is related to curriculum activity, but then people are while using Instagrams and social medias, people are able to connect with the people and showcase their talents. So also I would like to share my experience that when I was completing my graduation program, so it was quite difficult for me to handle my competition, dance competition, as well as my education. But then it also motivated me towards my activity, because after that I was a state level dancer. So I stood there second position. So it was quite amazing feeling. So I feel students should must focus on their education as well as the curriculum activity on an equal basis. Thank you, sir. Great. Yeah, definitely, ma'am. And we have also seen like through like our childhood itself, we have seen like India's Got Talent and Dance India Dance, and because of them, we have seen so many stars. Even a kid of 5 years, 4 years, they are like renowned as a celebrity. So, what do you think? Like social media as well as these kind of big platforms who have like showcased great talent, and in the timing of their schooling itself, children are like they are even earning because of extracurricular activities, and even just because of extracurricular activities and talents like dancing and singing, we are so lots of people are running their academies, and they are means it can be a way of their butter and bread. So what do you think about this? Totally, sir. Because, but like one thing that I truly believe that right now at this point, reality shows are quite staged already. So, but I think that social media gives a better and a bigger platform for them. Also, it is difficult because now the competition there also has increased. So, to make a name there, also you need to stand out. So that is something that, now that we have been talking about extracurricular is important. So now that we need to do is that how to to make yourself stand out amongst the crowd. That is also very important. So students needs to be given enlightened upon that also. So like marketing skills needs to be developed also And among what do you say, kids. Simran, ma'am, about this? Sorry, sir, I didn't hear you. What do you say regarding this point? What do you want to add on in this? Sir, I feel equal amount of weightage to be given, and it is not up to an individual to present themselves. Like I have gone through with this phase also, where my mother was not allowing me to go for an curriculum activity by not focusing on my studies. So it has to be go on hand in hand. That is what I feel. So I have also personally felt that yeah, extracurricular have done a great changement in our. If you go back 20, I think 90s, you we have just a thing like okay, only UPSC can give you such a success, such a platform. But now you can see like there is no such a thing. There is a category of sports. There is a category of extracurricular activities like paintings, and they are even getting awards of national awards and international awards. They are representing our country to the like whole world level. So what do you think, like now there is no such a thing even in the parents mind that okay, if my children is preparing for some DID, Dance India Dance or something else, so he is not doing something wrong. Yeah, he or she can also run a academy, dance academy or music academy, and she can do such a great thing. Like there are Arjit Singh and so many singers who have just done, like Neha Kakkar. She has like come up with the middle class family, and now she is on the top. So they have proved this thing, and now the mentality of our like parents and society is also changing day by day. So what do you say like this in this? Parents have become like now a lot more acceptable.
towards things like this. Now they're fueling it. Obviously, starting me the whole transition takes time. If you are not into extracurricular field right from start, or if you are taking a transition, then it takes time then for them to understand. But like parents have become a lot more understanding. And Simran ma'am, what do you say regarding this? Sorry, sir. Simran ma'am, what do you say regarding this? Simran ma'am. Yes, sir. Sir, I feel no doubt Isha ma'am is very correct on this point that parents are more flexible towards this thing as the generation is going on ahead like very fast right now, and during pandemic also we all know that education was not going on, so students were also more into their activities, curriculum activities. They were able to, like, many of the students were unable to study, but they were able to showcase their uh, USP, I would say. They were Yeah, able to showcase like their the USP whole on the pandemic platforms. the whole pandemic gave them like a great way to, it was a huge exposure for them. They discovered a lot Correct. about themselves. Correct. We were actually able to, it was kind of a self awareness time for us Yeah, to yeah, rectify totally. what do we have, Yeah. what things should we focus on. Even we came to know what talents do we Lot possess. of, lot of introspection went into it. So Correct. we can also see like in our team itself there are so many graphic designers and there are so many content writers. So do you think like this is also a part of extracurricular activity itself? Definitely, sir. I Yes, feel sir. this is, yes, I feel this is a part of extracurricular activity because this is something we are learning apart from our education, and we are giving ourselves a chance to grow. What Isha ma'am said. Yes, sir. Yeah. It is often said that things that you learn on your own will help you more in life than what you learn in school and your classrooms. So I think it was a lot more like that. We learned a lot of things ourselves about ourselves. So that has, all these challenges that we face as a person. If you, as Simran ma'am said, that she was in her when she was pursuing her dance career, and her academics was in between, whatever challenges that she faced, it prepared her uh, for future, and it has made her more and more stable. Now she can take a lot more now she can handle a lot more difficult situations in a better way as she could have done then. So I think it prepares you for life in general. And what do you think like being a girl, is it a quite a bit difficult to like come and get your passion be done like academics? Do you really face any kind of problem related to There girl? are fields where there are fields where women go and pursue. I think the whole structure has been made like that. They do feel problem. Like there is a lot of stereotype gender roles. If a boy child is going for Indian classical dancing, it is often seen, if you're not from a classical background, it is seen as something. Why will you want to do? And if I will want to do it as a girl, it will be more acceptable. Similarly, if I go for bike racing or things, if I go someday for football, for example, so it will be more stigmatized. If I would have been a boy, it would have been accepted by society, and I would have got easy access to some extent. I'm not saying that completely, but to some extent. And that's how I think that is one difference, because gender roles are quite significant in these And what areas. do you say, Simran ma'am, regarding this? I feel nowadays women are also more like much more into uh, things apart from education than the male categories are, and also it is very important for a woman to balance their life accordingly, not just for women but for men as well. Like it is very much important to balance both the things, then you will be able to achieve your goals when it comes to curriculum activities.
And if you're passionate about your if you're passionate about what you're doing, then it is very much important. And nowadays I feel it is not like biased processes going on anywhere related to women or like male or female. So after my next question, before my next question, I wanna ask from the audience, like, is there any boy or girl or any children who is really interested in any extracurricular activities? Is there someone? And one more thing, Isha ma'am and Simran ma'am, have you? Can we make a list like, okay, from era of 1990s, there was a limited thing like dancing and singing and theater are the only thing, or we can say painting are the some few things like we can conclude in extracurricular. But nowadays, like graphic designing and content writing, and you, as you just said, like blogging as well. And we Hmm. have seen so many YouTube content creators, Insta influencers. So what do you say? Are there other things that we can conclude in nowadays, and we can say, okay, this is also comes under the board of extracurricular activities? What do you say? Yes, sir, totally. It does. Everything, I believe, everything under the sun which does not include you getting a degree does come into extracurriculum more or less. Yeah, and one more question, like, what do you think, like, extracurricular, because of extracurricular activities only, have in any kind of interview or any kind of job, it helps? Yes, sir. Corporates especially involves gives a lot of pressure for extracurriculum. Like you just don't have to be A grade student. You need to know things beyond the books. So and social work is something which is accepted in every field. If you go for government job, if you go for corporate world, if you go for anything, it is accepted there. Okay, I think our guest has already arrived. So, Isha ma'am, over to you. And please welcome our guest. Yes, sir. Yes. Uh, A warm welcome to everybody present here today. I, Isha, on behalf of Kalaakaarmanch Simmi Foundation, welcome you all to today's webinar why extracurriculum is important. As right now we just had a talk about it, a whole brief question hour session right now. I would like to introduce our guest, Kashika Sisodia ma'am, today, who's a very well renowned face in the Indian YouTube scenario, known for her dancing. And I would like, I feel that, as I said, we have all heard about extracurricular being a, portable career option. Let's hear it from ma'am what she thinks. Over to you, ma'am. Okay, thank you so much. First of all, it's Kashika. Okay, sorry, Most of ma'am. them take my name wrong, but that's okay. I need to correct it. And thank you so much for inviting me in this webinar. So, I would like to start from my personal experience in life. So, me being from a middle class family, I was allowed to do everything what I want, but the thing is, I was not allowed to take it as a career. Like I was allowed to dance, to do go into sports and all, but I was not allowed to be like a full time YouTuber, full time choreographer, or a dancer like that. So it was a bit difficult for me to convince my parents to allow me to do this. See, मिडिल क्लास फैमिली जो पेरेंट्स होती है दे वांट द चिल्ड्रन either to be an engineer or a doctor or a teacher like where they have a safe job like every month you're getting some amount of money fixed and it's safe like for girls being a girl it's a safe job so you have a fixed working hour like if you are going in the morning you can come by evening so you're safe you are not allowed to go at the night and all so my parents wanted me to be an engineer fine so I was like a very obedient child, good in studies. So मतलब फाइट बैक नहीं करा कभी भी एंड उनके अकॉर्डिंग हर चीज करी थी मैंने सो first of all I was not into dancing when I was a kid actually धीरे धीरे when I got chance uh, then I realized that actually I'm good in something like I feel happy doing something I can do it
Like if you're giving me 1 lakh in corporate and 50,000 in dance, I will be happy taking 50,000 in dancing. That is what is important. And coming to the point of why this extracurricular activities are important. So it is very important because according to me, everything that I got is because of it. Like स्टडी से मुझे इतना कुछ नहीं मिला था जितना मुझे इस एक्टिविटीज वाली फील्ड में जाके मिला था. आई गेन कॉन्फिडेंस, आई गेन माई रिकॉग्निशन, आई आई वॉज नोन इन माई कॉलेज, इन माई ऑफिस, जस्ट बिकॉज ऑफ माई डांस. मेरा वर्क तो पता नहीं बाद में आता था, पहले मेरे डांस लोग जानते थे, देन अच्छा वो काम भी अच्छा करती है पर डांस बहुत अच्छा करती है, लाइक दैट इट वॉज. सो I am an engineer, by the way. I have done like 1.5 year of job in Bangalore as well, and then I have just finally jumped into dancing. So, talking about my story. So, when I was small, my father used to send me for Kathak classes. Um, because according to him, I was like, according to my family, I was a very graceful child, very expressive. So they wanted me to, open up a little bit. So I went there. I was not enjoying that much of dancing in that time. Like, Kathak मुझे बहुत boring लगता था. And then 2-3 साल I did it forcefully. Then I left in my board exam. Like 9th, 10th, I left that. उसके बाद after 10th, I just joined a dance academy like that just for fun. There I realized that I'm actually good at something and I can really do things well in this field. But parents का इतना नहीं था क्योंकि उनके according there are a lot of dancers, there are a lot of people like us who want to go in this field क्योंकि easy होता है, बहुत अच्छा होता है, fame सबको चाहिए होता है. So they were not like, they were like कि हम middle class family से हैं and it will be very difficult for you to go because कोई backup नहीं है, कोई family background नहीं है वहाँ पे, you're just alone. Also a very different person in a very different environment, so that will be very difficult for you to cope up with the environment. And being a person, I was very shy, I was like a very innocent, no कि कोई भी पागल टाइप बना सकता है, just because I was only girl in my side and मैं कभी बाहर गई नहीं थी. तो यही होता है, सिर्फ पढ़ाई करने से what happens that you are you know एक तरीके से अपने रूम में ही अपने घर में ही आप रहते हो, यू आर नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल. स्पोर्ट्स और ये एक्टिविटीज आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से हर जगह से मिलो और बाहर निकलो, आप थोड़ा घर से अपने आप को एक्सप्लोर करो. सो दैट इज द मेन पॉइंट जो मुझे लगता है कि इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर जाते हो तो आप इंटरेक्ट करते हो लोगों से. एंड मैं उस टाइम पे गई वहाँ पे. उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आया. उसके बाद पापा तो माने नहीं, लाइक ही वाज लाइक नो, नो फुल टाइम, पार्ट टाइम यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन दैट, बट फुल टाइम नॉट अलाउड. सिंपल. ओके फाइन, ठीक है, लड़ाई नहीं कर सकते थे, पापा है क्योंकि. उसके बाद व्हाट आई डिड पार्ट टाइम, लाइक आई वाज गोइंग फॉर डांस एकेडमी, लर्निंग, टीचिंग एंड एवरीथिंग. So in my college also, since the very beginning, I was into dancing. Like everybody know me through my dance, like through my dance. Every performance, every act, जो भी event function होता था उसमें I used to perform. फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत opportunities भी आई, हम लोग इधर उधर बाहर गए, लोगों से मिले तो उन्होंने भी appreciate किया. तो उसके बाद बीटेक करने के बाद आई डिड बीटेक बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि अच्छा ठीक है पापा मम्मी के लिए बीटेक कर लेते हैं. बीटेक करने के बाद बीटेक में भी सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, इंजीनियरिंग करी मैंने, बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, आई वॉज गुड, लाइक आई हैड 75% एग्रीगेट, लाइक पूरा निकाल के ओवरऑल ईयर्स का. दैट इज फाइन, लाइक गुड अमाउंट ऑफ सैलरी यू कैन गेट विद दैट परसेंटेज. एंड I was a good child, studies maybe. But because I was not having interest in that, so वो इतना ना अच्छे से चला नहीं. पापा को बीटेक के बाद I said that I want to go into dancing and all. I can make a career in it. I am just 22. I have a lot of time. I can do good. Like 21, 22. You have time. But he said no. Job करना है, job करना है. But that is important. Blah blah blah. So I did the job. I got the job. I went to Bangalore for 1.5 year. And you won't believe in, see, what is the point is when you have something in you, no, everyone can see it in you, whether it's in your college, in your office, in your family. It's just you need to understand that that is the thing which is good in you.
जब तक मैंने डांस नहीं किया, जब तक मैं घर में थी, okay, I was not knowing that I was good in dancing. I was good in expressing something. So when I went out, I explored myself, and then suddenly I see I wanted to be an दिस मैं बिल्कुल एजुकेशन में कुछ बनना चाहती थी पहले, अब मैं बिल्कुल ऑपोजिट आ गई। क्यों? क्योंकि मैं बाहर गई, आई एक्सप्लोर्ड, आई रियलाइज, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा। मेरा कंफर्ट जोन क्या था? सिर्फ पढ़ाई 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 घर में, ठीक है। मैंने कंफर्ट जोन से बाहर रखा, आई लर्न डांसिंग, आई लर्न दिस पेंटिंग एंड ऑल। आई रियलाइज दैट ओके, पेंटिंग अच्छा है, dancing is something that is giving me real happiness. I feel happy. I want to explore. I want to learn more. I want to know more. I want to go at places and meet with different people in this field. So that is when I realized that okay, this is important for me just because I came out of my zone. I um, I went for this dancing. Then I realized that okay, I'm good at dancing. अगर मैं नहीं चाहती थी, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं dancing में अच्छी थी. So that is what happened. धीरे धीरे I realized, first step, I realized I'm good in dancing. I did that. I kept on doing this part time कि साथ में कर रहे हैं. कॉलेज के बाद ही no rest, no आराम. वो आपको एनर्जी भी देता है। जब आपको कुछ करने का मन करता है ना, कॉलेज के बाद आप थकेंगे नहीं, आपको और एनर्जी आ जाती है कि ओके नाउ इट्स डांस टाइम, नाउ वी हैव टू डांस। सो इट वाज लाइक दैट। पहली बात मैं बाहर गई, मुझे रियलाइज हुआ मेरा डांस अच्छा है, आई कैन डू डांस। उसके बाद सेकंड पॉइंट आई रियलाइज कि ओके नाउ डांस इज समथिंग दैट कैन गिव मी रिकॉग्निशन। पहले लोग मुझे जानते थे लिमिटेड वाले, बट विद डांस लोग मुझे जानने लगे, अच्छा ये वो कशिका है ना, ये वो कशिका है ना, ये बहुत अच्छा डांस करती है, वेरी नाइस एक्सप्रेशन, लाइक ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते। तो देन यू फील लाइक आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि ओके ओके आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट, आई शुड एक्सप्लोर मोर। इन माय ऑफिस आल्सो आई यूज्ड टू गेट, see my super manager, the CSO, even those people were asking me that why are you coming here, why are you not going into dancing field and all, you are meant for it, you are meant for that. But see, वही मिडिल क्लास फैमिली पेरेंट्स का वही था कि तो सब बोलेंगे ही, you do a job, you do a job. So but from everywhere I was getting this that what are you doing here, just go. So एक और चीज जब आप रियलाइज करते हैं ना, if you are forced to do something or if you are forcefully doing something, you're not happy. I was earning a good amount at 22, at the age of 22, according to the age of 22, but I was not happy at all. I was not happy working. So after 1.5 years, I just said that I want to do something else. I don't want to be in this corporate field, right? Okay, so I left it and I asked my पापा फॉर 6 मंथ्स कि आप मुझे 6 मंथ्स दे दो। 6 मंथ्स के बाद ऐसा तो है नहीं कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा या फिर कोई मुझे बिल्कुल ही, या फिर मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, जो भी मुझे पता है। सो आई सेड ओके गिव मी 6 मंथ्स, जस्ट 6 मंथ्स इफ आई एम नॉट लाइक, मैं आपको प्रूव नहीं कर पाई, आई एम नॉट एबल टू प्रूव माई सेल्फ, आई विल डू वट एवर यू वांट मी टू डू, ठीक है। तो उस टाइम पे कोई बात अच्छे से करता नहीं है, ये तो सच है। देखो ये बात समझ लो, when you are going for something and you have confidence in you, no one else will have confidence in you, but you should have confidence in yourself. I had confidence in myself that I can do it because I wanted to do it. And I have this point in my mind that if you want to do something from your heart, you will get good things in life for sure. Just believe in yourself. किसी की वजह से अपने आप को doubt नहीं करना चाहिए. Just go with the flow. Do what you feel like. So I started this YouTube. मुझे YouTube में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सिल्वर बटन नहीं पता था क्या होता है। आई डोंट नो क्या होता है जब आपके 100 के हो जाते हैं, कैसी फीलिंग आती है। या फिर मुझे फेम वेम कुछ, लिटरली नॉट इवन लाइंग, आई स्वेयर आई वाज नॉट एट ऑल लालची, नॉट एट ऑल लालची। आई जस्ट वांटेड टू डांस, दैट्स इट। आई थॉट कि यूट्यूब से पापा के माइंड में आया कि यूट्यूब पे इतने सारे ऐसे हैं वैसे हैं, सो आई थॉट इट विल बी अ पॉइंट टू कन्विंस माई पेरेंट्स टू अलाउ मी टू गो इनटू डांसिंग, अंडरस्टैंडिंग कि पापा मम्मी के लिए कि वो मान जाएंगे, चलो यूट्यूब पे थोड़ा नाम है लड़की का तो फिर अलाउ कर देते कि चलो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। फॉर दैट आई स्टार्टेड माई यूट्यूब एंड ऑल वीडियोज एंड ऑल, बट अगेन सेम पॉइंट, जब आप जाते हैं यू रियलाइज, जब आप करते हैं देन यू रियलाइज ओके दिस इज समथिंग गुड, समथिंग मोटिवेटिंग, समथिंग अ स्टेपिंग स्टोन इन योर करियर। तो आई वेंट इनटू यू, मतलब यूट्यूब में मुझे बस ये था कि मुझे 6 मंथ्स में मुझे एटलीस्ट 50K या समथिंग तक पहुंचना पड़ेगा कि थोड़ा ना पापा को लगे कि हाँ ठीक है
फेस सही चल रहा है, बट सो आई वाज जस्ट डांसिंग, आई वाज कोरियोग्राफिंग, एक के बाद एक के बाद एक वीडियो, एक खत्म होता है दूसरा शूट खत्म होते है उसकी कोरियोग्राफी, देन शूट अगेन, सो इट वाज लाइक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। और मैं सुबह 5 बजे उठ के भी वीडियो शूट करती थी, हम लोग रात तक कोरियोग्राफी करते थे, सिखाते भी थे बिकॉज थोड़ा बहुत तो ऑन करना ही पड़ता था। तो आई यूज टू टीच ऑल्सो, आई यूज टू कोरियोग्राफ, एंड शूट में अभी अपने शूट के बीच में से आई हूँ क्योंकि टाइम हो गया था, तो अभी भी मैं शूट ही कर रही थी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 3 4 5 6 आवर्स, यू डोंट नो कब कैसा कितना टाइम निकल जाए। सो मैंने स्टार्ट किया, एंड लकीली बोलो, आई डोंट नो, लोग तो ये कहते हैं लकी, आई वाज लकी या जो भी है, बट व्हाट आई बिलीव इज व्हेन आप अंदर से आपकी फीलिंग, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, जो थॉट्स जो आपके होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग। लाइक इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू, आई हैव टू प्रूव, यू विल प्रूव। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि नहीं भाई, करना है करना है करना है। तो मेरे दिमाग में उस टाइम कोई लालच नहीं था कि मुझे 100K करने क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, मुझे कॉल्स आएंगी, मुझे सॉन्ग्स मिलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो अभी चलता है दिमाग में कहीं ना कहीं। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज वेरी प्योर सोल हु वांटेड टू डांस एंड एंजॉय, जस्ट फील गुड while dancing, so I was doing that। मुझे इस फ्लो में पता नहीं चला कि मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे पापा को सेटिस्फाई करना है, और एक मेरा ये था कि मुझे डांस करना है। दो चीजें थी मेरी लाइफ में, आई वॉज डांसिंग 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 डांसिंग। वो डांस करते करते मैं इतना फ्लो में आ गई है, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा टारगेट कब अचीव हो गया। इट वॉज लाइक अ क्लिक। आई वॉज गेटिंग कॉल की कशिका, व्यूज बढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारे, क्या हो रहा है, पैसे वैसे लगा के पढ़ाए हैं क्या, कितने पैसे लगाए हैं, एंड ऑल आई वाज गेटिंग ऑल दिस मैसेजेस कि हाउ मच अमाउंट यू स्पेंट इन दोज गेटिंग दोज 100K या 50K। मैंने बोला मैंने कुछ भी नहीं करा है, आई जस्ट मेड वीडियोस। उसके बाद इट वाज लाइक अ हिट। सो एंड दिस वाज द बेस्ट मोमेंट, जो शायद अगर कोई मुझे बोले ना कि अपनी लाइफ में आप क्या कैप्चर करना चाहते हो कि कैमरा एकदम से आ जाए और वो कैप्चर हो जाए, तो दैट विल बी दैट मोमेंट। मैं अकेडमी से आई, माय फादर वाज नॉट टॉकिंग टू मी अब तक, ही वाज लाइक हाँ ओके, इतना बात हो रहा था। पापा ने मुझे एकदम से बुलाया कि कम हियर, मतलब मेरे पास आके बैठो। मैं कि इनको क्या हुआ अचानक, ठीक है, मैं उनके पास जाके बैठी, उन्होंने अपना फोन खोला, ठीक है, उन्होंने अपना फोन खोल के मेरा यूट्यूब चैनल ओपन किया, फाइन। एंड आई वाज नॉट नोइंग कि वो मेरी सारी वीडियोस देखते थे, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करते थे। ओके, सो उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल खोला। सो यहाँ पे क्या होता है, आपका पेज होता है, यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, यहाँ पे आपकी वीडियोस के ऑप्शंस आते हैं, लाइक दैट इट इज। ओके, तो पापा ने क्या करा, ही जस्ट सेड कि बैठो, और पापा ने किया लाइक रिफ्रेश, रिफ्रेश करके देख कितने सारे बढ़ गए, फिर एक सेकंड रुक के रिफ्रेश करके देख कितने सारे बढ़ गए। ही वाज लाइक, आई वाज नॉट लुकिंग एट द नंबर्स, आई वाज लुकिंग एट हिम, द हैप्पीनेस ही वाज हैविंग ऑन हिज फेस, कि like I was feeling proud, finally थोड़े satisfied हुए, now he will allow me। So that moment was like कि yes, मतलब आपकी जो वो एक अपने ऊपर विश्वास होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट इफ यू हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। सो दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज वेरी प्रेशियस फॉर मी। पापा को पता नहीं याद हो नहीं हो, बट आई हैव दैट whole video in front of my eyes whenever I remember it, कि पापा वाज लाइक कितने पढ़ रहे, कितने पढ़ रहे, इतने पढ़ रहे, उतने पढ़ रहे, इतने पढ़ रहे, उतने पढ़ रहे, ऐसा वाला। तो दैट इज समथिंग। तो ये सब चीजें तभी हुई, कमिंग टू अ पॉइंट, कि जब हम उस फील्ड में निकलते हैं। अगर हम लोग, हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, बच्चा बड़ा हुआ स्कूल में डालो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये अभी तक बहुत चेंज हुआ है, पर अभी तक स्टिल मेंटालिटी वही है। बट इट्स वी हु हैव टू डिसाइड दैट नो, स्टडीज तक ठीक है बट वी हैव टू डू। ऐसा देखो, क्योंकि मैंने करा है तो मैं ऐसा मान नहीं सकती कि आप साथ साथ नहीं कर सकते हो। एक टाइम तक आप साथ साथ सब चीजें कर सकते हो, एक टाइम के बाद आपको एक चीज ऑप्ट करनी पड़ती है ताकि उसमें आप एक्सेल कर सको, उसमें आप एक्सप्लोर कर सको। तो पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर सकते, यू कैन डू इट वेरी वेल, वेरी नाइसली। इनफैक्ट इफ यू हैव इंटरेस्ट इन इट, आप पढ़ाई ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे अगर आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। बिकॉज यू नो कि आपने इतना टाइम 3 4 घंटे अपने दिन की एक्टिविटी में दे दिया, अब आपको पढ़ाई करनी है, तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल होगा ना, वो डबल होगा। तो आप उस टाइम पे जो पढ़ेंगे वो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टिविटीज में आप पार्ट लें, यू विल रियलाइज योर इंटरनल कैलिबर कि आप में कितना कैलिबर है, आप कितना क्या क्या कर सकते हैं। तो आप वो करते हैं, फिर उसमें करने के बाद देन यू लर्न न्यू थिंग्स।
this can be done, okay, this can be done, ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ. So like that things happen, and at the end what is important is your happiness. Money, if money is your happiness, then go for money. If doing something like, for me dancing is happiness, I'll do dancing. For me, my parent satisfaction is important, I'm doing that. So whatever it takes, do that, but make sure that you are happy at the end. Parents कुछ नहीं चाहते हैं, कोई भी कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है कि हमारा बच्चा stable हो. For that you have to prove them that you can be stable in this field, you can be stable with this. So it all depends on how you think and how you take things. Okay, now let me breathe and ask questions. You ask questions, Wow, that whatever was you want to know. really amazing, your story. I mean, a lot of us can relate to it, a lot of us. So, does anyone has any question? Okay, ma'am, I'll start. My first question is, Yes, matlab, ma'am. okay, Komal. Ma'am, as you said that for middle class people, it is very difficult for children to take part in the extra curriculum activity because their parents don't want Mm-hmm. them to go in school and they think that there is Mm-hmm. no scope in it. So, ma'am, what do you about this matter? कि देखो आप मिडिल क्लास फैमिली में हो, पैदा हुए हो, तो आपको फॉर श्योर स्ट्रगल डबल करना पड़ेगा. ठीक है, डबल कैसे कि योर पेरेंट्स वांट यू टू बी गुड इन स्टडीज, ओके, एंड यू वांट टू बी गुड इन सपोज डांसिंग. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू गिव योर टाइम इन बोथ. स्टार्टिंग में वही मैंने बोला, बोथ दोनों जगह टाइम देना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. आप अपने पेरेंट्स को, सपोज योर पापा या योर मॉम वांट्स कि आपको 80% लाने ही हैं, सपोज डांस सीखना है, तो मुझे डांस सीखने का अलाउ कर दो प्लीज. तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मुझे डांस सीखना है, सपोज डांस सीखना है तो मुझे डांस सीखने का अलाउ कर दो प्लीज. So like that. So that depends on how you deal with it. No, कि पापा ठीक है मैं 80% लेके आऊंगी, आपको 80% चाहिए ना, ओके आई विल ब्रिंग 80%. मुझे अलाउ कर दो कि मैं रोज 1 घंटे डांस के लिए जा सकूं, या फिर मैं ये कर सकूं, या फिर मैं वो कर सकूं. ठीक है. अब देखो, अगर आप इतनी जल्दी स्टार्ट कर दो, आपके फायदा क्या होगा कि आपके पास स्टडीज कॉलेज तक का टाइम होता है आपके पास, कि आप अपनी एक्स्ट्रा फील्ड जो है उसमें थोड़ा अच्छा करो और कहीं लेवल पे पहुंच जाओ कि जॉब तक जब भी चांस आया आपको, उससे पहले आप उस फील्ड में कुछ अच्छा करके दिखा दो कि पेरेंट्स अलाउ कर दें. बिलीव मी, अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं ना, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. उनको बस ये लगता है कि इस फील्ड में उतना पैसा नहीं है, उतनी सेफ्टी नहीं है, उतना मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि डांस मतलब किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में नहीं है, एजुकेशन से ज़्यादा है. सो दैट यू हैव टू प्रूव इट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन अस. और आज तो यार इस टाइम पे तो इवन लाइक वैकिंग वैकिंग बोलो, या फिर अगर आप अगर आपको सैलेड भी बनाना आता है ना डिफरेंट, कि आपने तड़ बना दिया, तो आप तो उससे भी फेमस हो जाते हो यार. आजकल तो बहुत इजी हो गया है, पहले वाले लोगों के लिए डिफिकल्ट होता था. आज तो इफ यू आर गुड एट समथिंग, it's very easy for you to convince your parents to be known in front of people. YouTube है, बहुत सारी चीजें हैं, Instagram है. Keep on putting videos, let people know. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10th 20th टाइम कोई तो वीडियो थोड़े लोगों के सामने आएगी, उनको कुछ पसंद आएगा, then you will realize कि okay इस फील्ड में मैं और अच्छा कर सकती हूँ. So it depends on you how you have to deal with it. पहले से ही देखो बोलेंगे तो है ही कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना. You have to find out ways कि अच्छा पापा मार्क्स ले आऊंगी ये कर दो, अच्छा पापा मैं ये कर दूंगी, ये कर आप फिर ये कर देना. So you have to मतलब मेहनत तो डबल करनी पड़ेगी. देखो ये तो है, थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है घर वालों को मनाने के लिए. ठीक है कोमल. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. No problem. Anybody else? Okay, and Okay, hello, ma'am. hello. Hello. So actually, I would like to ask you a question. Like, when you're going towards a different field, like when you're good at your Mm-hmm. studies as well as, and you want to pursue other things besides this. So, like Mm-hmm. when you are living like in a family and all, surroundings and all, so there are people like who started along with you and who are like a little least than you or equal to you in studies and all. So when they are doing jobs and all, and we want to pursue something else apart from this, so like we used to like get to hear like, see, they are doing well in there. If you would have been there, you would have done more better. Now what you're doing, you're not doing that much anything, like it's not that much paying off.
for your hard work, whatever you're doing. So how to deal with that kind of struggle or problem? सी, अगर ये बात है एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट इन द सेंस कि अंकल आंटी एंड ऑल, जस्ट हियर एंड थ्रो, उसको निकाल दो, क्योंकि आप चाहे, अगर पता है आप 1 लाख भी अर्न कर रहे होगे ना, वो उसमें भी कोई ना कोई कमी निकालेंगे। वो उसमें बोलेंगे कि आप, आपकी बेटी 1 लाख अर्न कर रही है और अभी तक उसकी शादी नहीं करवाई आपने, अब उसकी शादी नहीं करवा सकते, अब उसकी शादी करवा दो। ये आ जाता है कि आपकी बेटी इतनी मेहनत कर रही है, ग्लो ही नहीं है आपकी बेटी के फेस पे, आपकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, आपकी बेटी को वो प्रॉब्लम है। लाइक आई हर्ड दीज थिंग्स फ्रॉम लाइक माई फ्रेंड्स एंड ऑल्सो। वन थिंग आई हैव रियलाइज कि उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कुछ कर लो, दे विल से समथिंग। आप यार उसको ही ले लो, MS धोनी को ले लो, कितना मतलब उसने कितनी मेहनत करी, सब उसकी तारीफ करते हैं जब वो अच्छा प्ले करता है। और कोई भी मैच अगर वो बेचारा गलती से हार जाए या फिर अच्छा नहीं प्ले कर पाए, दे आर लाइक जस्ट ऑपोजिट, गालियां और मीम्स और ये और वो। सो इससे आप एग्जाम्पल लो कि नो मैटर हाउ गुड यू डू इन योर लाइफ, इफ यू जस्ट डू वन थिंग बैड, दे विल क्रिटिसाइज यू फॉर दैट योर होल लाइफ। सो उनको छोड़ो यार, आपको इम्पोर्टेंट चाहिए व्हाट यू फील, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट। बात रही पेरेंट्स की, वो कहीं ना कहीं होते हैं, वे कहीं ना कहीं मतलब वो बाद में आके बोलते हैं कि हाँ सही बात है, ये कहीं ना कहीं आपको भी फील होता है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट व्हाट, लाइक योर रियलाइजेशन कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। अब जैसे कोई अगर मेरा फ्रेंड अभी 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा रहा है मेरे साथ का, तो अगर मुझे फील हो रहा है ना यार कि ये इतने पैसे कैसे कमा रहा है, और वो चीज मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि इतने पैसे कैसे कमा रहा है, मैं साथ में थी, मैं उससे अच्छी थी पढ़ाई में, मैं नहीं कमा पा रही हूँ, तो ये चीज मेरी गलत है। मुझे ये सोचना चाहिए कि अच्छा आई हैव अ टारगेट, मेरा फ्रेंड इतने कमा रहा है, तो मैं अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा क्या करूँ, इम्प्रूव अपने आप को कि मैं उस लेवल तक जा सकूँ। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी फैमिली, आपको अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, दैट्स इट। पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन कौन कर रहा है, हार्डली मैटर। तो अगर पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो पेरेंट्स को आपको ये कन्विंस करना ही पड़ेगा कि भाई देखो, इतना तो है नहीं कि मैं बहुत ही कम कमा रही हूँ या फिर नहीं कर सकती, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, आप मुझे बताओ, फिर आप उसमें एक्सेल करो। सी आपके लिए भी एक टारगेट हो जाएगा फॉर श्योर। अब आप ये तो है नहीं आप 50,000 रुपए करोगे, मतलब पूरी जिंदगी 50,000 ही कमाते रहोगे। फर्स्ट इफ यू हैव अचीव समथिंग, देन यू हैव अ टारगेट टू डू समथिंग मोर गुड, थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और अच्छा। तो उसके लिए आपको भी थोड़ा ना करना चाहिए ना, आप भी थोड़ा करेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। बोल दो ठीक है मम्मी मेहनत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो करती हूँ, सो मे बी क्या पता वो हो ही जाए, नहीं हुई तो इट सेम वही थिंग। इट depends how you deal with it, how you understand their thoughts, what exactly they want, and how you present your feeling and your thoughts in front of them, कि उनको समझ में आए कि अच्छा ठीक है। एंड उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं रह सकती हूँ, तो आपको मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है या पैसा बता दो, मैं आपके लिए पैसा पैसा फिर पैसे ले आती हूँ फिर। तो लाइक दैट यू हैव टू थोड़ा इमोशनल भी करना पड़ता है यार, कभी कभार हो जाता है इंडियन फैमिली ना, बहुत भावुक लोग होते हैं, मान जाते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. Thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम। Next, anyone? ओके, एनी क्वेश्चन? Uh, Ma'am, I really wanted to ask this. It's a very simple question. That when once you like when you decided to leave already one established career to move on to another, so you had to start from the rock bottom. So like, weren't you like scared? Because that is something I would be really really scared, to be very honest. See, I was frankly speaking, I was scared when I was thinking after my BTech to go into dancing. ठीक है, जब मैंने बीटेक के तुरंत बाद, लाइक आई वाज नॉट डूइंग एनी जॉब, तब मैंने सोचा कि डांसिंग में, तब मुझे थोड़ा डर था। बट 1 साल 1.5 साल जॉब करने के बाद मुझे इतना लेवल तक वो रियलाइज हो गया था कि मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, आई कैन नॉट डू समथिंग गुड। अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ, अगर मेरी उस टाइम 35,000 सैलरी है, तो वो 2 साल तक 35 ही रहेगी, मैं नहीं बढ़ा पाऊंगी उससे, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ तो मैं काम अच्छे से नहीं कर सकती। तो दैट इज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि एट दी एंड 2 साल बाद करियर मतलब बेकार होगा, 2 साल बाद भी वो वाला फेज आएगा, जीरो वाला या कम वाला। तो इससे अच्छा कि अभी से जो मेरी फील्ड अच्छी है उसमें से कर देते हैं ना यार, क्या पता कि मैं इतनी Hmm. स्ट्रांग हूँ या फिर मेरे थॉट इतने स्ट्रांग है कि मैं उसमें अच्छा कर जाऊँ क्या, आई वाज वेरी मच श्योर कि नहीं यार मैं कर लूंगी। उनका थॉट ही अलग है, मेरा थॉट उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग था,
अब धीरे धीरे आके थोड़ा सा और कभी कभी ढीला हो जाता है, बट उस टाइम इट वाज लाइक नो आई कैन डू, मतलब आई वाज नॉट इवन थिंकिंग ओके खत्म, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब आई वाज थिंकिंग कि मेरे ऑफिस वाले मुझे निकाल दे ऑफिस से, मैं इतने नौटंकियां करती थी वहां पे, लिटरली नॉट इवन लाइंग। वहां पे सबको परेशान कि सर ये अच्छा नहीं है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, वो मुझे निकालने को तैयार नहीं। वो कभी मुझे इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर ब्रांच, कभी उधर ब्रांच, गो टू हियर, यूएस वाला ब्रांच देने को रेडी, ये वो रेडी। पर ये सब मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, सो ये भी पता होना चाहिए क्या बताना नहीं बताना, कि वो बोलते कि ओ यू आर सो इम्पोर्टेंट टू देम, दे आर नॉट रेडी टू लीव, यू डोंट लीव, दैट लेट इट बी, डोंट लीव। तो ऐसा नहीं है यार, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, और इन सब चीजों से ना आपको ये रियलाइज होता है कि अच्छा लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव समथिंग इन यू, and that you have to make it more strong, that feeling you have to make it more strong so that you can do something good. So it simply depends आप कैसे सोचते हैं, आप अपने आप को कैसे लेके चलते हैं, nothing else, it's very simple, everything is simple। आपके बस आसपास के लोगों को, फ्रेंड जोन को, अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखो जो आपको पॉजिटिविटी दे, दैट्स इट। नेगेटिव पीपल वेरी फार अवे, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव सोल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एंड एवरीथिंग विल बी गुड एंड हैप्पी, सिंपल। Yes, okay. Anybody else who wants to? Do you think Nitesh social sir media has. helped Ma'am, you? was there Yes. ma'am, was there any phase like when you were getting into this career path, like you were somewhere you were low on that, like you lost some kind of motivation, and how would you pull yourself up at that moment? वेरी मच। सी राइट राइट नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, कि अपना एनवायरनमेंट, अपना आसपास का सर्कल आपका कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट कब फील हुआ कि व्हेन यू लाइक सोशल मीडिया पे, इफ यू हैव 10 गुड पीपल, लाइक 10 पीपल अप्रिशिएटिंग यू, देयर आर टू यू नो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव वाइब्स देते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट करते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि अगर कोई मुझे ये बोल रहा है ना कि कशिका आपका डांस में ये अच्छा था बट ये इतना अच्छा नहीं लगा, ओके सो ट्राई टू इम्प्रूव दैट, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज वो मुझे जेन्युइन वो लगती है एडवाइस की, वो जेन्युइन है बंदा, कि वो जो अच्छा लगा वो भी बोल रहा है, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बोल रहा है, सो आई कैन इम्प्रूव। बट कुछ लोग होते हैं दे आर जस्ट बहुत ही नेगेटिव, कि क्या है ये, कुछ भी कर रहे हो, ये करो करो, यहाँ से जाओ, यहाँ से भागो, मतलब बहुत ही वियर्ड इंडियन इंडियन उसमें तो बहुत ही ज्यादा। सो आई वाज, एज आई टोल्ड यू, आई वाज वेरी इनोसेंट गर्ल, आई वाज लाइक होम जैसे क्यों बोल रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने क्या गलत किया, मैंने किया, आई यूज्ड टू इवन क्राई ऑन दीज वन और टू कमेंट्स जो नेगेटिव होते थे। बट एज आई टोल्ड यू, माय फ्रेंड सर्कल टचवुड इज वेरी नाइस, माय ब्रदर्स, माय फ्रेंड्स, दे आर सो सुपर गुड। तो वो मुझे बैठ के समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे, वो मुझे रियलाइज करवाते थे कि यार कि तू देख कि तू कहाँ से कैसे लड़की आई है, नाउ इफ यू आर वीक हाउ कैन यू डू दिस, लाइक इसको आगे कैसे लेके जाएगी, कैसे अच्छा करेगी। सो इस सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली बहुत काम आती है, जो आपको मोटिवेट कर सके। और पता है जैसे अब पेरेंट्स हैं वो थोड़े ओल्ड उसके हैं, माइंडसेट के हैं, तो उनको इतनी जल्दी कन्विंस करना आसान नहीं है। अब आपके ब्रदर सिस्टर या फिर आपके फ्रेंड्स आपके माइंडसेट के हैं, इफ दे नो ना कि आपने इतना अचीव कर लिया, दैट मीन्स यू कैन डू इट, उसके बाद दे विल ऑटोमेटिकली, जो रियली में आपके लिए थोड़ा अच्छा फील करते हैं, आपको अच्छा देखना चाहते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। तो आपको उनके मोटिवेशन से थोड़ा एकदम से किक मिल जाता है, फिर वापस आप आ जाते हो पास से। मतलब मेरे साथ तो यही होता है कि अगर मैं थोड़ा डीमोटिवेट होती हूँ, आई हैव फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डिस्कशन कर सकूँ, एंड दे आर लाइक कि याद करो, रिमेंबर करो अपनी पुरानी जो भी आपने करी थी मेहनत, डोंट वेस्ट इट, जस्ट गो विद द फ्लो, not everything is perfect anywhere, so like that। So Nitesh sir actually asked कि did social media help you in achieving your goals? Yes, of course it did। सोशल मीडिया क्या ही जमाना है यार आजकल, इट्स सोशल मीडिया ओनली जो आपको रिकॉग्निशन दिखाता है। सी एट द एंड काम तो आपको ही करना है, मेहनत आपको करनी है, बट इट्स जस्ट अ वे आपका जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपका जो टैलेंट है वो सबके सामने लाने के लिए। उसके बाद वो लोगों के ऊपर है कि उनको पसंद आया नहीं आया। सो इम्पोर्टेंट तो है सी, और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया यूट्यूब से ही धीरे धीरे सब कुछ हुआ। यूट्यूब से बस ये हुआ था कि मेरे पापा कन्विंस हो गए थे, उसके बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशन, ये और वो तो धीरे धीरे आते रहते हैं, लाइक क्लासेस एंड ऑल। तो वो तो भी फ्लो है, और अभी मुझे सिर्फ यूट्यूब पर अभी 1.5 ईयर्स हुए हैं।
सो उसके अकॉर्डिंग लाइक आई एम सेटिस्फाइड व्हाट इज हैपनिंग, Hmm. बिकॉज जो लोग का भी नेम है जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, दे हैव गिवन देयर 5-6 years to this YouTube also, to this field also, then now they are at a position कि लोग उनको जानते हैं. So I am very much like satisfied कि ठीक है यार, इतना टाइम तो लगता ही है, so slowly slowly आराम से चलते हैं, it's okay, and इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आई एम एंजॉइंग दिस, दैट इज इम्पोर्टेंट. स्लो अर्निंग या स्लो आपका जो करियर है वो आपको तब बॉदर करता है जब आप वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हो, आप सिर्फ डेस्टिनेशन देखते हो. मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पे प्रोसेस एंजॉय करती चल रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो कब जा रहा है, इट्स जस्ट वेरी हैप्पीली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है. और अगर पता है फुल टाइम खुश भी रहोगे तो भी अच्छा नहीं है ना, मोटिवेशन होना चाहिए और नेगेटिव लोग भी होने चाहिए आसपास, सो दैट यू कैन इम्प्रूव. कहीं ना कभी नेगेटिव लोग भी यार कुछ सही बता देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो जाता है, सपोज मे True. बी कॉस्ट्यूम का या फिर आपके एक्सप्रेशंस का या कुछ, यू कैन इम्प्रूव एंड मेक योरसेल्फ मोर बेटर. इजी. Is anybody else who wants to ask anything? Good evening. I'm from Kartavya NGO. I have a question that Mm-hmm. how can extracurricular activities be cost efficient? Because in Kartavya we teach underprivileged kids. So I just want to know that Mm-hmm. how can this be helpful to them if they want to enhance their skills in low budget? Mm-hmm. So is there any way that they can Low pursue it? लो बजट, सी सोशल मीडिया इज वेरी, यार हम लोग इतने सारे आपके चैनल्स हैं, इफ यू आर नॉट लाइक इफ यू कैन नॉट अफोर्ड द सैलरी या फिर जो भी उसका फीस है, ट्यूशन फीस, नॉट सैलरी, फीस. सो सोशल मीडिया पे ट्यूटोरियल्स हैं, फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, नॉर्मल वीडियोस हैं, यू कैन गो देयर. मैं भी एज आई टोल्ड यू मिडिल क्लास फैमिली से थी, इतना सपोर्ट नहीं था, आई यूज टू स्टडी कि ओके वैकिंग में क्या होता है और आपके शफल में क्या होता है, विच मतलब बॉडी पार्ट कैसे मूव होता है, आप उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है. फिर आई यूज टू सी यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो. आप अगर आप एक ही, सी मैं अपना तरीका बताती हूँ आपको, सो कैन आई एक्सप्लेन इट, लाइक मैं डांस फील्ड से हूँ तो मैं अपने डांस फील्ड का बताती हूँ, सो यू कैन रिलेट विद अदर एक्टिविटीज. और जैसे लाइक डांस का है तो आई यूज टू सी एक गाने पे एटलीस्ट 5-6 वीडियोज कि एक सॉन्ग पे 5 लोगों ने कैसे कोरियोग्राफी करी है. आई यूज टू एनालाइज दैट कि अच्छा इसने ऐसा करा, इसने किस बीट पे कैसे स्टेप किया है, इसने किस बीट पे कैसे स्टेप किया है. सो दैट इंक्रीजेज योर इंटरनल थिंकिंग इवन मोर, इवन यू डोंट नो कि वो कैसे अपने आप हो जाती है इंक्रीज. सो उसके अकॉर्डिंग फिर जब आप गाना सुनते हैं, यू फील द डिफरेंट बीट्स एंड यू डू इट, सो वो ऑटोमेटिकली आपका ना आपकी नॉलेज इन्हांस कर देता है. एंड वन मोर थिंग इज प्रैक्टिस. सी मैं आपको सिर्फ सिखा बता सकती हूँ कि ओके ये ऐसे 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 करना है, वो बताने के लिए हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, यू कैन सर्च, आपको एक ही डांस फील्ड पे एक ही फॉर्म पे इतने सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं. बट प्रैक्टिस आपको, अगर आप 10,000 रुपये दे के कोई कोर्स कर रहे हो तब भी आपको करनी पड़ेगी, तब भी आएगा. चाहे आप ऑनलाइन फ्री में सीख रहे हो यूट्यूब वीडियो से, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी. तो एट दी एंड आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो इसलिए आपके अंदर वो होना चाहिए कि मुझे करना है. अगर करना है तो फिर यू विल फाइंड ऑप्शन. ऐसा कुछ नहीं है कि महंगे कोर्सेज ही अच्छे होते हैं या फिर सस्ते वालों में आप कुछ नहीं सीख सकते हो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. सो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, तो जो लोग रियल में चाहते हैं इस फील्ड में कुछ करना, सो दे कैन फाइंड देयर ओन वेज, दे कैन फाइंड, दे कैन प्रैक्टिस ऑन देयर ओन. खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आएगा. उसके बाद यार छोटी छोटी वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं, उनमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो. सो दैट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर नॉर्मल कि आप एक बार जाके ना कर सकते हो. सो ओके रिचा, आई होप आई I हैव. I think that would be enough. So I would like Nitesh sir to give vote of thanks now. Thank you so much, ma'am. But I have few questions. If you can, if you have time, I can ask. Okay, go ahead. I have also tried in YouTube, and I know because it is 2020, and before 2017, it was the era of like, okay, we just we most of the public was just viewers. There's few people who were Hmm. content creators, and now in Hmm. 2020, it is like a UPSC competition. I can see. I can feel Yes, it. it is. That's so true. So how you manage that? Because like you are, yeah, this is also matters in like being a girl.
and being a from a middle class family and being a YouTuber, it is a very big thing. So how you handled it, and what you wanna say to the like students of schools, that how they can initiate it, their passions, and how they can follow. ओके सो मतलब मैं अपना पॉइंट बताती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ एक पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि पहले क्या होता था, अगर महीने में आप 4 वीडियो डाल रहे हो, सो यू वर गेटिंग दैट मच व्यूज और इतना आपको मिल रहा था। अब क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको बस अब 4 की जगह 8 वीडियोस डालनी है, दैट्स इट। और 4 की जगह 8 वीडियोस बनाना इट्स नॉट अ बिग टास्क बिकॉज यू लव डांसिंग। इफ यू लव समथिंग एंड यू हैव टू डू इट मोर, सो एक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, कंसिस्टेंसी सब में नहीं होती है नितेश। नितेश राइट? यस, कंसिस्टेंसी सब में नहीं होती है। स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल वो लोग वीडियोस डाल सकते हैं, आपके टक्कर में आपकी बराबरी कर सकते हैं, दे कैन डू थिंग्स। बट पेशेंस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं करता है, हर कोई अपनी कैलिबर पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो इफ यू हैव ट्रस्ट, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डू थिंग्स। और रही बात अर्निंग एंड उसकी, तो तभी मैं बोल रही हूँ कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करो ना, वो आपके लिए ईजी रहेगा, बिकॉज यू हैव टाइम टू कंप्लीट योर स्टडीज। उतने देर में जब स्टडीज कंप्लीट होगी, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना एक ना इमेज बना चुके होगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जब एजुकेशन भी पूरी करेंगे अपनी, तो आपको ट्यूशंस होते हैं या फिर डांस ट्यूशंस होते हैं, एंड ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो आपकी अर्निंग में आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज, अगर आपने कंटिन्यू किया, तो फॉर श्योर यू विल गेट सम और the other things. So that is what I believe, and that is what is you know the easy way out to help you in terms of money. And ma'am, in this long journey, do you have any mentor, Mm. because it requires most of the time? Mentor as in terms of like teaching me dance, or in terms of what? In each and every term, like emotionally, who was standing there when no one was there, whom you wanna. um देखो, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं था, इट वाज जस्ट मी। बिकॉज जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत प्रूव करना पड़ता है। स्टार्टिंग में ऐसा कोई नहीं था, बट येस आई वेन आई वाज लर्निंग नो पीच पीच, वहाँ पे था, मतलब आपका एनवायरनमेंट अच्छा था। दे वर लाइक मोटिवेटिंग। ऑब्वियसली बात है, मेरे स्टूडेंट होंगे तो मैं भी उनको मोटिवेट ही करूंगी, यस यू कैन डू इट गुड एंड ऑल। सो वो कहीं ना कहीं था, बट फैमिली टर्म्स में देखा जाए, तो इट वाज नो वन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज देयर जो मुझे अलाउ कर रहा था कि मैं डांस फील्ड में जाऊं। लाइक दे वर सपोर्टिंग मी, दे वर वेरी हैप्पी जब मैं डांस करती थी शादी वगैरह में, या कोई मुझे मतलब अप्रिशिएट करता था, तब दे वर वेरी हैप्पी। बट एज अ करियर, एज आई सेड, नो वन वाज देयर, सो इट वाज ओनली मी जो थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करता था। उसके बाद जब कॉलेज में गए, तो फिर फ्रेंड्स एंड ऑल, सो लाइक फ्रेंड्स, एंड देन भाई वगैरह जब थोड़े बड़े हुए, तो दे वर लाइक Ma'am, are you there? Kashika, ma'am, are you there? There may be a network issue, or maybe there is a call. That's why. Yeah, I think there is a network issue or a call. Sh- She has been disconnected. Okay, I think she will rejoin soon. Otherwise, Isha ma'am, we have learned so many things, and from what do you say, like she really did struggle. She really did struggle. Everyone's struggles can be different, sir. So hers is different from what we've seen earlier. But struggle is struggle in the end.
I'll just say that. And I think decision. One thing I have realized listening to a story is that decision making skills needs to be developed into young children since a very good, yeah, since a very tender age, so that they can. Uh, so when there's time, so they can take good decisions, thoughtful decisions when there's time. Even because of YouTube and other stuff, because there was a time like in 1990s only some like directors will direct movie and we are like as a viewers only. But now because in each and every society there are content creators, so because of Yeah, yeah. there are more script writers, there is more like job roles of script writers and video editors, and these kind of skills we are needing because of social media. So just because of extracurricular activity only we are getting their butter and bread. So we can also say and this is a extracurricular activities are like doing a great major role in feeding those. And I think it is also now it is a time like we can say that yeah, academics and sports and extracurricular activities must be divided as and must be seen as similar. What do you say, ma'am? Yeah, yeah, totally. Totally, because as you said it rightly, it has totally, because a lot of people are coming up with their own self-made projects. So it has totally changed the scenario of like there's less dependency on others, and people are coming up with their own mind and own, like you can see the individuality in each and every project, the raw uh, nature of it. So I think, yeah, that's totally worth it. Sir, actually your mic is muted. Now we should conclude because I think there is a network issue to like ma'am. So then also we wanna like because ma'am bless us with their words and she came here. So from the team of Simmi Foundation, we are very thankful to her. So thank you so much, guys, to joining us, ma'am. Now we can conclude. Uh, there is a, I am attaching a feedback form here, and those who, all the participants who have joined, y'all are supposed to fill the feedback form so that we can proceed with your e-certificates. With That's that, I would like to conclude this today's webinar. It was a great webinar. It was a great learning experience for us. I think we are all more and more clear and more stable in our minds as to what we have to choose if any of us had any doubt. With thank you, that, thank you thank so you, much. sir. Thank you, everybody.